हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बहुत ही तहे दिल से स्वागत है आप सभी का वीडियो नंबर 23 में। और हम मार्केट इंटरमीडियरीज में थे, अब इंस्टीट्यूशनल इंटरमीडियरीज को हम देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स को हम देख रहे हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सारे इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स को देखते आ रहे हैं कि कौन होते हैं, जैसे एफ कौन होते हैं, पी नोट पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सब हमने जाना। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले प्राइवेट इक्विटी फर्म से कि प्राइवेट इक्विटी फर्म क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Private equity is a term used to define funding available to companies in the early stage of growth, expansion और buyout. सो गाइस, प्राइवेट इक्विटी में वेंचर कैपिटलिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, वो मेरा मेन क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है। राइट, इन्वेस्टिंग कंपनीज में बी प्राइवेटली हेल्ड और पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज। ओके, चलिए इतना हम कॉपी करते हैं और हम इन्हें पहले लेमन लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ओके, private equity firms are investment companies that provide money to business that need funding to grow, expand, or restructure. Unlike venture capital, which focus on very early stage startup, private equity is typically need for more mature companies with might be looking to grow faster, make improvements, or even be bought out from their current owners. ठीक है, मतलब वेंचर कैपिटल बहुत ही अर्ली स्टेज वाली कंपनी से पैसा लगाते हैं, बट जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं वे थोड़ा मेच्योर कंपनी से पैसा लगाते हैं। थिंक ऑफ अ प्राइवेट इक्विटी फर्म एज अ बिग इन्वेस्टर दैट बाय अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अ कंपनी, helps make it better, and then either sell it for a profit or help it become even more successful. These firms usually invest in business that already have some history but need extra funding and expertise to reach the next level of growth. ओके, ऑलरेडी ऐसी कंपनी से पैसे लगाते हैं जो कि बहुत अच्छा कर रही होती है, बट उन्हें नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए और पैसों की ज़रूरत है। हाउ प्राइवेट इक्विटी वर्क, इन्वेस्ट इन कंपनी, प्राइवेट इक्विटी फर्म यूज देयर ओन मनी एंड मनी फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स to buy shares in a company, either privately held or a public company that they take private, helping the company grow. After they invest, private equity firm work to make the company more profitable. This could involve improving management, cutting cost, increasing sales, or expanding into new markets. Selling for profit. Once the company has grown and become more valuable, the private equity firm sells its stake in the company, usually making a profit. This could happen through a sale to another company, an IPO taking the company public, or other means. ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेट इक्विटी फर्म वर्क कैसे करते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी में जो कि ऑलरेडी अच्छा कर रही, बट उन्हें नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, ये क्या करते हैं, नॉट ओनली उनको पैसों के साथ मदद करते हैं, उनको और भी चीज़ों में हेल्प करते हैं, जैसे उनको मैनेजमेंट डिसीजन में और मतलब कर करके उनको ग्रो करने में उनकी हेल्प करते हैं। और become more valuable, private equity firm sell its stake in the company, usually making a profit। जब वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है तो उसमें से वो अपना स्टेक बेच करके निकल जाते हैं, तो अच्छा खासा प्रॉफिट जर्न कर लेते हैं वहाँ पे। चलो इमेजिन कीजिए, there is company in India called Smart Home Appliances that make innovative kitchen gadgets but need money to expand its product and reach more customer. A private equity firm like Blackstone India sees potential in the company and decided to buy a 40% stake in it for 100 crore. After investing, Blackstone worked with the companies to streamline its operation, improve its marketing, and grow its sales. After 5 years, smart home appliances become very successful and more valuable. Blackstone then sell its 40% stake for 200 crores, making a significant profit from their initial investment. Private equity firms play an essential role in the company by helping businesses improve, expand, and create jobs. This investment helps company become more competitive and better positioned for future success. सिंपल ये दोनों में जो मेरा क्वेश्चन था कि वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी में डिफरेंस क्या होता है। वेंचर कैपिटल बहुत ही अर्ली स्टेज वाली कंपनी में पैसा लगाते हैं और प्राइवेट इक्विटी फर्म थोड़ी मेच्योर्ड कंपनी में पैसा लगाते हैं। सिंपल।
हेज फंड्स, फिर उसमें आगे भी और बचा हुआ है। द टर्म प्राइवेट इक्विटी इंक्लूड्स वेंचर कैपिटल फर्म। द मनी इन द fund is contributed by investors called limited partners and invested and managed by the general partners. Some of the private equity funds are a specialized fund with competence in particular industries or stage of the company and targeted deals such as funding buyouts. चलो एक बार ये समझ लेते हैं। चलिए, so private equity includes venture capital firm but is a broader term। ठीक है, मतलब वेंचर प्राइवेट इक्विटी का ही एक पार्ट है वेंचर कैपिटल। इट रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट फर्म दैट यूज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू बाय एंड इन्वेस्ट इन कंपनी। द इन्वेस्टर्स हु पुट मनी इनटू फंड आर कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर्स। जो जो मतलब जो भी प्राइवेट इक्विटी में पैसा लगाते हैं, ओके, जहाँ से प्राइवेट इक्विटी को पैसा आता है, लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं। पीपल और फर्म मैनेजिंग द फंड आर कॉल्ड जनरल पार्टनर्स, एलपीज और जीपीज, राइट। ये तो क्लियर है। यानी कि अभी देखो, एक होता है जो पैसों को मैनेज करता है और एक होता है जो पैसों को इन्वेस्ट करता है। पैसों को इन्वेस्ट करने वाले को प्राइवेट इक्विटी में कहते हैं एलपी, और पैसा मैनेज करने वाले को कहते हैं जीपी। In simple terms, think of a private equity fund as pool of money collected from different investors like big companies or wealthy individuals who want to make a profit by investing in businesses. The general partners run the fund and make decision about where to invest the money. The limited partner are one who provide the money but don't get involved in making investment decision. How private equity funds work: raising money. Private equity fund collect money from limited partners who are investors looking to make a return on their money. This could be large organizations like pension fund, insurance company, or wealthy individuals. Second, investment by general partners. The GP, who are expert in finance and business, use the money to buy or invest in company. This could include buying a company outright, helping it grow, or funding a buyout. Buyout यानी कि taking a public company private. Specialized funds. Some private equity fund focus on a specific area. For example, they might be fund that only invest in tech startup or that invest in mature companies looking for expansion, or fund that focus on buying out struggling companies, fixing them up and selling them at a profit. Imagine a private equity fund called Growth Partners Fund. This fund collect 1000 crore from various investors like banks and HNI individuals. This fund generally the fund's general partner decide to use this money to invest in healthcare companies focusing on startup that are developing new medical devices. The fund helps the startup growth increase their sales and become more valuable. After a few years, Growth Partners Fund sell its share in these companies for a profit, sharing the gain with its investor, the limited partners, and taking a share of themselves as the general partners. Right. Private equity is important because it helps company with the funding and expertise they need to grow and improve. It also provide investors with an opportunity to earn return on their investment, which can be higher than what they would get from more traditional investment like stocks or bonds. बेसिकली प्राइवेट इक्विटी में रिस्क भी ज़्यादा है, बिकॉज हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो कि लिस्टेड नहीं है, अर्ली स्टेज में है, राइट। थोड़ी सी मेच्योर हुई, उतनी बड़ी नहीं है, बट इसमें रिटर्न्स के पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे भी प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि आपके बिहाफ पे और इन्वेस्टिंग करते हैं। और यहाँ पे ना जो इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है उसे हम अ, मैन ये कहते हैं जीपी कहते हैं, यानी जनरल पार्टनर, और जो पैसा देते हैं उसे हम लिमिटेड पार्टनर कहते हैं। सेम हेज फंड में भी वैसा होता है। चलिए, मतलब हाँ, इन्वेस्टर को लिमिटेड पार्टनर कहते हैं और मैनेज करने वाले को जनरल पार्टनर कहते हैं हेज फंड्स में भी। हेज फंड, a hedge fund is an investment vehicle that pool capital from a number of investors and invest that across the asset, across the product, and across the geographies. This fund manager generally have worldwide mandate to generate return on the invested capital. They hunt for opportunities to make money for their investors wherever possible. In that sense, actually, term hedge fund is misnomer as their funds are not necessarily be hedged. चलिए, समझ लेते हैं इसको भी लेमन लैंग्वेज में।
ये क्या हो गया? डबल डबल क्यों आ रहा है गाइस? अच्छा, दोनों पढ़ करके हम किसी एक में रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। Hedge fund are investment fund that gather money from a group of investors and use it to invest in a wide variety of assets such as stock, bond, real estate, or even commodities. They are managed by professional fund managers who have a lot of freedom in choosing where to put the money and to make money and to make the best possible returns. Okay. In simple terms, taking a hedge fund is a big pot of money that is put together by different people who want to make more money from their investment. A professional manager takes this pot and look for the best opportunity to grow it. This can invest in anything they think which will earn a profit, whether it's shares or companies, bonds, real estates, or even more complex things like currency and derivatives. Why the name hedge fund can be misleading. The word hedge makes it sounds like this fund try to protect themselves from losses, but that's not always the case. While some hedge funds do use strategies to reduce risk hedging, many of them don't focus on protecting against losses. Instead, their main goal is to find a way to make as much profit as possible, even if means taking high risk. Example: imagine an investor named Alex who want to make money but isn't satisfied with just putting money in a regular savings account or stock market index fund. Alex decided to put 1 crore into a hedge fund managed by Global Investment Limited. The fund manager at Global Investment Limited used the money to buy shares in tech companies, invest in real estate, and even trade currency in different countries. They might also use special financial strategies to make money when market go up or down. Hedge funds are known for being flexible, aggressive, and sometimes risky. They can look for investment opportunity anywhere in the world and in any type of assets, making them appealing to investors who want potentially higher returns, but they are not guaranteed to make money and sometimes can lose a lot. ओह, मतलब कई बार क्योंकि ज़्यादा हाई रिस्क लेते हैं ना, तो लॉस के भी चांसेस में बहुत ज़्यादा होते हैं। चलो इसका सेकंड रिस्पॉन्स पे एक बार देख लेते हैं। A hedge fund is an investment fund that collect money from various investors and use it to invest in a wide variety of assets such as stock, bonds, real estate, or even commodities. The goal of a hedge fund is to make much money as possible, often by taking high risk or by finding opportunity that other investors might miss. Okay, in simple terms, think of hedge fund like a big money pool where investors put their money together. The money who manage the people who manage the hedge fund called fund managers use that money to make investment in different places across various industries, countries, or type of investment. They are very flexible and will try to make money in any way they can using strategies like buying stocks, betting on market changes, that is called derivatives, or even using more complex methods like short selling. Key point: wide range of investment. Hedge fund don't focus on one type of investment. They might invest into stock, real estate, bonds, currencies, and even art. High flexibility. The manager of hedge fund have a lot of freedom to choose how and where to invest the money, allowing them to take more risk to try and earn bigger profits. Risky strategies. The term hedge might suggest that this fund tries to protect against losses, but in reality, hedge fund often take risk to try to maximize return, which can sometimes lead to big gains or losses. Example: imagine a hedge fund called Global Opportunities Fund. It gather money from investors and uses it to invest in tech companies, buy real estate in foreign countries, and even bet on currency movement. The fund manager constantly look for new changes to make money, whether it's merging market undervalued stocks or other places where they think they can earn a return. While they try to make money in every possible way, there's a high risk that things might not always go as planned. Hedge funds are attractive to investors because of the aim generate high return, but they can also be risky and the way not always protect the investor loss. And they might seem such as I prefer this response. Okay, चलिए, सो वी आर डन विद द हेज फंड्स। तो हम समझ चुके हैं हेज फंड्स में क्या होता है। उनका नाम हेज फंड होता है, बट वो हर प्राइस हेजिंग यानी मिनिमल लॉस के बारे में नहीं सोचते, बहुत एग्रेसिव जाते हैं वो उसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो गाइस, वी आर डन टिल हेज फंड। नेक्स्ट वीडियो में हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को जानेंगे। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है गाइस, उसको हम समझेंगे लेमन लैंग्वेज में। सो गाइस, आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने इस वीडियो में
प्राइवेट इक्विटी फर्म और हेज फंड के बारे में जाना। और नेक्स्ट वीडियो में हम एआईएफ स्टार्ट करेंगे। कुछ भी गाइस आपको डाउट है, क्वेरीज है, तो प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। हैव अ ग्रेट डे।